हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सूरज स्कूल. In the last video, we have discussed about three type of coefficient of thermal expansion. First is coefficient of linear expansion, that is represented by alpha. Second is coefficient of superficial expansion or radial expansion, that is represented by beta. And third one is coefficient of cuticle expansion, that is represented by gamma. This is for one dimension, this is for two dimension, this is for three dimension, and these are based on thermal expansion. Almost all substances expands on heating. लगभग सारे के सारे वाटर को छोड़ के, वाटर में हवा की फैलेगा लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस के बाद फैलना शुरू होगा. वो थोड़ा सा एक अलग सा बिहेवियर है वाटर का, बाद के अंदर डिस्कस करेंगे इसको. अब हम फाइंड आउट करेंगे, find the expressions, yet derive the relation between three type of coefficient of thermal expansion. Firstly, we find the relation between alpha and beta, means one dimension coefficient of linear expansion, two dimension coefficient of superficial expansion. For this, consider a sphere of side L. Then initial area, initially जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करा है, then स्क्वायर की साइड L है, then area becomes L square. First equation we have considered. After increasing the temperature delta T, हमने delta T टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका. इंक्रीज इन द टेम्परेचर, चेंज द टेम्परेचर है. बढ़ाने के बाद जो एरिया इंक्रीज हुआ वो इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया, that is delta A. Increase in length, that is equal to delta L. That total area becomes, and also पहली वाली वीडियो के अंदर आप देखोगे हम डिस्कस कर चुके कि जब डेल्टा A टेम्परेचर बढ़ाएं, डेल्टा T टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंक्रीज इन द एरिया बिकम्स डेल्टा A, that will be equal to delta A, that will be equal to, that is directly proportional to initial area, that is directly proportional to increase in the temperature. Proportionality का साइन है, ये कांस्टेंट लगता था, that constant is beta, superficial coefficient into area into delta T. Similarly delta L is equal to, ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके. Here coefficient is alpha into increase in the original length L into increase in the temperature delta T. Equation second, equation third. Then total area of the cube after increasing the temperature, total area, that is equal to A plus initial A था delta T और बढ़ा दिया, delta A और बढ़ा दिया, A plus delta A. Total length becomes L plus delta L. This simplifies. Then after increasing the area, after increasing the temperature, total area becomes this, total length becomes this. Then what will be the total area? A plus delta A, that is equal to L plus delta L का whole square. आइडेंटिटी से स्क्वायरफुल लोगे, हम आइडेंटिटी से स्क्वायरफुल लेंगे. व्हाट वी गेट? वी गेट A plus delta A, that becomes equal to L square plus delta L square plus twice of L into delta L. आइडेंटिटी से whole square. As A is equal to L square from equation 1, A और L square cancel out. Delta L is very small. Delta L बहुत ज्यादा small है, so delta L square can be neglected. Delta L square can be neglect करा जा सकता है. Delta L small है, small change in the length है, small change in the temperature के बाद तो स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर करेंगे और भी ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी मिलेगी. देन वी गेट, दिस इंप्लाइज डेल्टा ए, दैट बिकम्स इक्वल टू, इधर से डेल्टा ए बच गया, इधर से ये नेगलेक्ट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया? ट्वाइस ऑफ एल इनटू डेल्टा एल. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड व्हाट विल डेल्टा ए, डेल्टा ए एंड डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर दो. हमें क्या मिलेगा यहां से? बीटा इनटू ए इनटू डेल्टा टी, दैट बिकम्स इक्वल टू ट्वाइस of L into delta L की वैल्यू alpha into L into delta T. Delta T cancel out, delta T A L square से cancel out,
this implies beta is equal to twice of alpha. Relation between coefficient of superficial expansion and coefficient of linear expansion, that is beta is equal to twice of alpha. It is the relation. Now secondly, we will find the relation between coefficient of cubical expansion, that is for 3 dimension, gamma and alpha. पहले गामा और अल्फा का निकालेंगे, बीटा और अल्फा का निकाल दिया, फिर उसके बाद तीनों को कंबाइन करके लिख देंगे। लिख सकते हैं तीनों के, दोनों के बीच रिलेशन एक बार आ जाए, फिर दोनों के बीच एक बार आ जाए, तो फिर हम तीनों के बीच रिलेशन लिख सकते हैं। बीटा इज इक्वल टू अल्फा. नाउ वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा. व्हाट विल बी द रिलेशन? नाउ एज there is a gamma that is for 3 dimension, that is for cubical expansion. So firstly we have to consider a cube of side L whose initial volume that is equal to L cube. Equation number first, L cube. Now on increasing the area and temperature delta T, its volume increase in the volume. Increase in volume becomes delta V. Increase in length that is equal to delta L. Then total, and also we have discussed in the previous video delta V that is equal to change in the volume कितनी होगी अगर आपके पास initial volume V है, change in the temperature delta T है, then what will be the change in the volume? That is directly proportional to V, that is directly proportional to temperature delta T. Increase in the temperature, then delta V is equal to coefficient लगता था that is gamma, and delta L हम पहले ही लिख चुके पहले वाले रिलेशन के अंदर, alpha into L into delta T. Equation number second, equation number third. Then volume becomes V plus delta V. V plus delta V. That must be equal to, क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है after increasing the temperature, sorry, whole cube. Then identity से whole cube follow के what will you get? L cube A cube plus B cube means delta L cube plus thrice of A into B. A into B means L into delta L into A plus B. A is L, B is delta L. As V is equal to L cube, V is equal to L cube cancel out from equation 1. Delta L is small. अच्छा इसको भी ऊपर उठा के delta V becomes equal to delta L cube plus इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर क्या बन गया 3 times of L square into delta L plus 3 times of L into delta L square. As similarly delta L is small, so delta L cube and delta L square can be neglected. क्यूब करेंगे और भी ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी आएगी, स्क्वायर करेंगे स्मॉल क्वांटिटी, क्यूब करेंगे और भी ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी. This can be neglected. This whole term can be neglected. This term can be neglected. Then what will you get? Delta V that is equal to क्या मिलेगा यहाँ से? That is equal to 3 times of L square into क्या बचेगा यहाँ से L square into delta L. Putting the value of delta V and delta L from equation second and third, we get delta V is equal to gamma into V into delta T. That is equal to 3 times of L square into delta L की value. What will be delta L? That is alpha into L into delta T. Delta T cancel out delta T. L square or L cube, L square into L cube, and that becomes equal to volume. Here we get gamma is equal to 3 times of alpha. It is the relation between coefficient of cubical expansion and coefficient of linear expansion. And in the previously they have find beta is equal to twice of alpha. Then what will be the अच्छा बीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल के बीटा और गामा के अंदर रिलेशन यहाँ जाएगा, अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, दिस इंप्लाइज ये अल्फा की यहाँ से निकाल दो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 यहाँ रख दो, दिस इंप्लाइज गामा इज इक्वल टू व्हाट विल द गामा दैट इज इक्वल टू थ्राइस या 3/2 ऑफ बीटा. दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा.
we can find the relation between alpha, beta and gamma. It is the relation between three type of coefficient of thermal expansion. These are alpha, beta and gamma. Alpha is equal to beta is equal to twice of alpha. Gamma is equal to thrice of alpha. So we can find the relation between alpha, beta and gamma. Three types of relation we can find. This is all for today. Thanks. Have a nice day.